Today I would be reflecting little bit on your writing skills. You will have to write an essay, okay? Small essay. मतलब I would be giving you 45 minutes या 1 hour. तो लगता है मैं 1 hour से ज़्यादा आप लोगों को time दूँ. And then I would be reflecting on your writing skills clearly. Online student would give me their PDF, like answer sheets in PDF form. और अमन अभी मैं आपको फीडबैक क्लास में ही दूंगी जो आपने लास्ट आंसर लिखा है. Today I am going to cover this topic. So UPSC is always framing question on this particular idea. And you people really need to develop crystal clear clarity on this particular topic. I will send it to you, Krishna. Now, please focus here. Don't ask, don't distractment or attention, please. This is a very important topic. So UPSC have several times asked question, how did the contribution of intellectuals, how did the contribution of intellectuals have led to the development of sociology? Development of sociology. Okay, so this is the topic. I would say to explain this, Aman, switch on your camera. To to explain this point, I like to tell that how all of you need to understand that this question and most of the questions or topics in sociology is relying on this fundamental base of sociology. Sociology is a study of causes and effects in society. Okay, तो मैं पहले आपको एक छोटा सा concept समझा रही हूँ, which is given to us by Emile Durkheim. To explain Emile Durkheim, again I will go to Auguste Comte. What have I done? What am I doing? What is my objective? Do write down your objective in your notes. Okay, the more clear notes you are going to make, running notes, the better unique content you will going to achieve. I'm telling you, this exam is not at all nowadays about content, it is about application. Application, आप मेरे thoughts को समझो, उसको लिखो और वही यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करेगा. मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स ने क्या रोल था, हाउ, व्हाई, व्हेन, इट शेप द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है,
उसको समझाने के लिए पहले मैं आपका बेस बना रही हूँ, तो आप अपने साइड में लिखो ये, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ओके, so you better write the strategy. So the question here is, there are two variables, okay, independent variable and dependent variable, okay. So what, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये आपको और क्लियर होगा जब मैं रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी बताऊंगी, ओके। अभी मैंने आपको क्या कहा है कि एक स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा रही हूँ, वो स्ट्रैटेजी है that how you need to understand most of the sociological phenomenon। क्या कर क्या रहे हो, क्यों खड़े हो आप? हाँ जल्दी करके हाल रखो, आप आओ जल्दी करो, यहाँ पे रखो, ये क्लास से पहले होना चाहिए ये सारी चीजें ना। सॉरी की बात नहीं है, आप लोग अपना काम एफिशिएंटली किया करो। आप नए हो, आपसे पहले जो है उन्होंने आपको सिखाया नहीं होगा, रखो इसे यहाँ पे। कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। मैं इसके थ्रू आपको ये आंसर समझाऊंगी और आने वाले टाइम में भी आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ही हम सोशियोलॉजी में मेनली स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डायनामिक्स इन सोसाइटी। नाउ टू एक्सप्लेन दिस आई एम गोइंग, तो बेसिकली दिस इज गिवन टू अस बाय डर्कहाइम। तो आप डर्कहाइम को समझ नहीं सकते हो, राइट right? अगर आपने ऑगस्ट कॉम्ट नहीं समझा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डर्कहाइम अगर आपने ऑगस्ट कॉम्ट नहीं समझा। तो स्ट्रैटेजी क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, कि मुझे इंटेलेक्चुअल्स का रोल समझना है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ओके। कॉजेज यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल्स हो गया, इफेक्ट्स हो गया सोशियोलॉजी, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आप इसको लिख लो, बाद में आपको क्लियर होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपको रिसर्च का समझाऊंगी जो कि बाद में आपको क्लियर होगा। वेरिएबल, research topic, it is like in your sociology, this is research topic 3, ठीक है। causes and effects समझाने के लिए अगेन मैं रिपीट करूंगी पॉजिटिविज्म। अभी पॉजिटिविज्म एक्सप्लेन करूंगी और फिर आई विल कम टू द इंटेलेक्चुअल्स। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, पहले ऑब्जेक्टिव लिखो, अदरवाइज क्या होगा, इट विल गो आउट ऑफ योर, अबव योर हेड, ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग शुरुआत से ही एक यूनिक हाई फेचिंग एडवांस लेवल सोशियोलॉजी पढ़ो। सोशियोलॉजी अब मैं जिस बच्चे से रैंडमली पूछती हूँ कि आपका ऑप्शनल क्या है, इज इट ये, या तो वो इधर सोशियोलॉजी है या तो वो एंथ्रोपोलॉजी है, ओके। तो अब हम इस पे जीत, रेस जब भी जीत सकते हैं जब हमारा अप्रोच डिफरेंट हो, ठीक है। तो अगर हम अपने डिफरेंट अप्रोच से सेम सिलेबस को पढ़ेंगे, यू विल सी के यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, ओके। इसको लिखिए पहले आप लोग, जो मैंने समझाया है स्ट्रैटेजी को लिखिए, देन विल अंडरस्टैंड।
Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yeah, there was some error. Actually, technical person is not here, so I have to do all my own. Just a moment. Okay. So, I hope you will have written the strategy. Now, let's discuss this. So, you need to know, class, that sociology did not emerge in isolation. Okay? It did not emerge in isolation. And definitely, it is just not a discipline. Okay? You need to understand, it is not just a discipline. I would say it is an intellectual response to crisis. ये कोर पॉइंट है जिसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. टॉपिक 1 में से अक्सर बहुत हाई लेवल क्रिटिकल क्वेश्चन आता है. So you will see that sociology did not emerge in isolation. It is not just a discipline. Okay? It is not just a discipline. Okay? In fact, it is a response. यार आपने क्लास में बताना. जाओ बंद करो. अब आप बंद करो क्लास दरवाजा. It is an intellectual response to the crisis. Okay? It is an intellectual response to crisis. Please understand this. Okay? This is a core point which you need to understand. The real architect of sociology were not merely scholars. They were thinkers. Okay? Confronting disorder. ये आप लोगों को क्लैरिटी बनानी पड़ेगी. तभी मैं बोलती हूँ that sociology is highly overlapping in civil services का जो syllabus है. Okay, whether it's SA, GS1, ethics, polity,
क्योंकि यहाँ पे थिंकर्स इन्वॉल्व है. ओके, सो द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी वर नॉट मियरली स्कॉलर्स. तो जो रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी आर नॉट merely scholars. ओके, ये कोई सिंपल एक दो स्कॉलर्स नहीं थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एस्टेब्लिश कर लिया. दे वर थिंकर्स कन्फ्रंटिंग डिसऑर्डर. तो हु आर दे? They were thinkers confronting disorder. Okay? Now, you need to situate this historically, because you are talking about sociology which emerged in 18th, 19th century. So you need to go back in the past. How many of you got clarity on this point? So here the point here is that I have to tell you that we need to go back and understand in a historical context. Okay, यहाँ से clear है? अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक नया अप्रोच आप लोगों को, यूनिक अप्रोच आई एम टेलिंग यू. Emile Durkheim argues that sociology must study society. It is not there. You focus here, it is not there. Okay, the only heading, the intellectuals, wala part is there. Okay, but see, we need to understand in a unique manner. तो सुना होगा आपने, आप आई रहे थे. तो बुक पढ़नी है, रीडिंग कर रही है, बट उसको सिर्फ समझना है कि अच्छा ये एक टॉपिक है, ये एक थीम है. अब इस थीम को हमको डीपर समझना पड़ेगा. तो बुक में से कोई भी बुक में मतलब रेफरेंस के लिए देती हूँ. हाँ, अगर कोई बुक आपको पढ़नी है, समझनी है, तो जो सोशियोलॉजी की बुक आपको मिली होगी मेरी, वो आप उसको समझ सकते हो. ठीक है, वो भी आई थिंक इट्स नॉट, मैंने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं करे हैं, रिसेंट एडिशन, मतलब अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी मच बेटर देन एनी अदर टेक्स्ट बुक. ओके, और एज इट इज नहीं रखना उसमें. मत देखो मैं यहाँ पे जो समझा रही हूँ उसको समझो, क्योंकि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम समराइज कर लेंगे और उसको ही हम बार बार रिपीट करेंगे. सोशियोलॉजी इज डन. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स है सोशियोलॉजी. यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग कि हमको हिस्टोरिकल जाना होगा. अब इमाइल डर्कहाइम ने क्या कहा है? इमाइल डर्कहाइम इज आर्गुइंग दैट वी नीड टू, और सोशियोलॉजिस्ट need to apply positivist approach to study social world. Now here the key word is positivism or positivism. अब to explain that, background में I am explaining ऑगस्ट कॉम्टे. दोनों ही फ्रेंच है. ओके, दे बोथ आर फ्रेंच. ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है कि देखो जो नेचुरल साइंस है, okay, they are working on 3 parameters. Fine. So what are they? So it is like you observe, okay, and then you predict, and then you generalize. Okay, like a theory. I will explain it later on. So natural science is like वो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद कनेक्शन सीखेंगे, वो प्रिडिक्ट करेंगे, तो वो थ्योरी बनाएंगे. तो बेसिकली नेचुरल साइंस क्या है? डिस्कवरी कर रही है लॉज,
on which physical world are operating. ठीक है, this is natural science. ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है that sociology, earlier he called this term as social physics. Social physics, later it becomes sociology. सोशियोलॉजी का भी यही रोल है कि इनको लॉज समझने. ओके, ऑगस्ट कॉम्टे ने जो पॉजिटिविज्म बताया, इट वाज एक्चुअली मोर लाइक अ डॉक्ट्राइन, more like a doctrine. Okay, it was more like a philosophy. And to explain that, he has explained that how even all the mathematics, physics, chemistry, they are also philosophical in nature. Okay, then later on Durkheim argues that okay, Auguste Comte has told us that how we need to study social world. He agreed on that, but he went beyond Comte's positivism. ठीक है, so later on Durkheim actually explained in his work rules of sociological method and his work division of labor, another very important work, suicide, then the elementary forms of religious life. Durkheim ने explain करा that how we need to conduct research. Okay, so he said कि कोई भी phenomena हो, उनके कुछ causes होते हैं, causes और उनके effects होते हैं. तो हमको हमेशा causes और effects पढ़ना है by using statistics. या numbers in a quantitative manner. Okay, in a quantitative manner. That's what we have to understand. How many of you got clarity on this, on positivism? Auguste Comte का positivism and Durkheim का positivism. इन दोनों थ्योरी ने बेस बनाया कि समाज को पढ़ना कैसे है. ओके, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि वी नीड टू डेवलप अ न्यू डिसिप्लिन. वो तो क्लासिकल थिंकर हो गए, ऑगस्ट कॉम्टे तो एक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हो गए. अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल है जिससे सोशियोलॉजी डेवलप हो गई, and you people are writing blindly on this, you know, Auguste Comte का ही सिर्फ या कार्ल मार्क्स का this and that, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोशियोलॉजी emerged maybe in 19th or 18th century, mid 18th century, but it is an effect of long time causes ushered during Renaissance period. तो इंटेलेक्चुअल्स तो रिनाइंस इंटेलेक्चुअल्स भी है, ओके, एनलाइटनमेंट इंटेलेक्चुअल्स भी है, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स भी है. इन लोगों ने कुछ देखा कि अच्छा समाज में तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको तो यू नो वी नीड टू हैव समथिंग, जो हमने कल भी बात करा था. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सोशियोलॉजी डेफिनेटली इज, यू नो, इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी डिसिप्लिन. It is actually easy, in fact, but problem है ना कि आपको वो critical aspect देखना पड़ेगा. Okay, so you need to understand this important part.
18th 19th सेंचुरी में मे बी 2 मैसिव डिस्ट्रप्शंस हुए, जिसकी वजह से यू कैन से इंटेलेक्चुअल्स ने सोचा कि नहीं, राइट, हम अब आपको वी नीड टू हैव सम लाइक न्यू डिसिप्लिन जो हमको ये प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कराए, ठीक है। अब जब इंटेलेक्चुअल्स की बेसिकली बात हुई है, यू नीड टू स्टार्ट विथ रिनाइंसा एंड एनलाइटनमेंट। दो आपका फोकस नहीं होगा अगर क्वेश्चन पूछे इंटेलेक्चुअल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो एक पहले मैं डायग्राम आपको बताऊंगी। अच्छा, कॉजेज एंड इफेक्ट समझ गए। एक और कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये रिसर्च का है, पहले ये समझ लेते हैं। What are variables? Variables are indicators on which we base our research. If I want to understand poverty, so I may see the income or the education. Okay, so these are the variables, these are the indicators. Okay, so now if I am saying बेटा अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो, ये हो गया एजुकेशन, ठीक है, और ये हो गया आप लोग प्लीज समझो, ऑल ऑफ यू, दैट आई एम टीचिंग एनसीईआरटी एंड दैट टू बेसिक्स, सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ है हमारा। ओके, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ एडवांस सोशियोलॉजी टू ऑल ऑफ यू। ओके, बट बेस जो है वो एनसीईआरटी ही है। ओके, तो अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजों में पेशेंस मेंटेन करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं आप लोगों को भी सोशियोलॉजी, मॉडर्निटी एंड हाउ इट इमर्ज वो नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों का बस बेस सोशियोलॉजी बना रही हूँ। तो यू पीपल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हुए आऊंगी, जिससे आपको सोशियोलॉजी वैसे ही पढ़ो जैसे आप लोगों को हेल्प होगी, मतलब आई एम मेकिंग यू सेल्फ रिलायंट। आप लोग ऑटोमेटिकली ये जो कंफ्यूजन होगा, क्योज होगा, उससे आप लोग कुछ एक्सप्लोर करोगे, समझोगे, क्लैरिटी आएगी, और जब एक बार सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा ओके नाउ वी हैव गॉट द पिक्चर्स। जैसे लाइफ में होता है ना, लाइफ में कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, so 1 2 years 3 years 4 years, but after 10 years when you look back to those events it makes perfect story to you। तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। So you people have to just wait little bit. Now education, for example, I am conducting a study on the basis of, let's just say, development. So I am trying to understand development in India. Education is my independent variable. Okay, education is my independent variable. Now if education quality is good, then employment will be up. If the quality is bad, then employment will be on lower side. ओके, तो एजुकेशन में मैंने चेंजेस करे तो चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में भी दिखेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है डिपेंडेंट है एजुकेशन में, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो इमर्ज हुई वो एक्चुअली इमर्ज हुई बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। उसमें इंटेलेक्चुअल्स का जो रिस्पॉन्स था वो भी एक कॉज था जिसकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, राइट। इज दिस क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज बेसिकली ऑन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अक्सर आपको टॉपिक 3 में से क्वेश्चन आता है, वेरिएबल्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सैम्पलिंग। प्लीज राइट डाउन दिस टॉपिक 3 का।
एक बॉक्स बना लीजिए, मैं रीडिंग दे रही हूँ, डिक्टेशन दे रही हूँ, वो लिख लीजिए। अभी अभी नहीं, मैं बताऊंगा। प्लीज राइट डाउन। अभी आप बाद में आ जाना, अभी आप बाद में आना प्लीज, मुझे डिक्टेशन ले लीजिए, वैसी क्लास डिस्टर्ब होती रहती है। Please write down in sociology, variables are characteristics that can take different values across individuals, groups or situations. They help researchers measure, compare, explain, and predict social phenomena. Full stop. By converting abstract concepts ब्रैकेट में क्लास, जेंडर, इनइक्वालिटी, into measurable variables, comma, sociology becomes systematic, empirical, and scientific. In sociology, variables are characteristics that can take different values across individuals, groups, or situations. They help researchers measure, compare, explain, and predict social phenomena by converting abstract concepts into measurable variables. Sociology becomes systematic, empirical, and scientific. So variables establish cause effect relationships, जो मैंने भी explain करा है. Variables allow researchers to test how one factor influences another. So in this case, education level is independent variable. Employment will be dependent variable. समझ में आया? ठीक है guys, are you all getting it? Confusion तो नहीं हो रहा? Getting it? साइड में प्लीज लिख लो, that is the research topic, that is
from topic 3, independent variables. So everything is overlapping. ओके, तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप वेरिएबल्स को आपने एक्सप्लेन करा, एंड देन यू कैन लाइक गिव एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन. तो आपने डिफाइन करा वेरिएबल्स, उसके बाद आपने सोशियोलॉजी के ही किसी कॉन्सेप्ट से उसको एग्जाम्पलीफाई किया. आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेन यू विल डू दिस, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट really good marks. Okay, और इसमें आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, आप धीरे धीरे समझोगे सारे पॉइंट्स को. अमन, आर यू हियर? Am I audible or not, Aman? Just a moment. I think some of the students have gone out of the class.
Now are you in? Yes, Aman. Yes, ma'am. Okay. You want me to switch off the AC? Okay. Now please understand very quickly. What we have to understand, I have written one paragraph for all of you. Though sociology appeared in the 19th century, its foundation were laid much earlier through a long intellectual transformation that began with the Renaissance, followed by the Enlightenment, and matured during French and Industrial Revolution. Now, these pointers or these themes are so relevant for all of you for your exam purposes because these historical antecedents, these developments led to the development of sociology. And from topic 1, we are generally getting how did Industrial Revolution led to the development of sociology or French Revolution or Renaissance or Enlightenment. ओके तो इस टॉपिक पे इसीलिए हमको बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए होती है. ओके तो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका वही इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, तो आप सिर्फ क्लैरिटी कैसे शो कर लोगे अपने आंसर्स में? यू जस्ट राइट हियर इंटेलेक्चुअल्स during different phase. This is Renaissance, this is Enlightenment. Now, this is simultaneously it was going on French Revolution because Enlightenment actually led to the foundation of French Revolution and Industrial Revolution side by side. These are the major factors by which we have got sociology because it is an intellectual response. ठीक है, ये समझ में आया? Causes and effects समझ में आया कि नहीं, है ना? तो ये पहले ही मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी क्लियर कर रही हूँ. वी आर गोइंग टू हैव इन डेप्थ डिस्कशंस ऑन Renaissance, this and that. ओके तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हूँ, जो भी बार बार रिपीटेड होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बार बार पढ़वाऊंगी. ओके डिफरेंट वे में. तो अब लेट जैसे Renaissance आ गया, ठीक है, अब आपको अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है. ओके फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं डीपर वे में पढ़ाऊंगी. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम फ्लो चार्ट बाद में बताते हैं, ठीक है. अब Renaissance को डिस्कस करते हैं. Renaissance का लिटरली मीन होता है रीबर्थ. ओके कीप मेकिंग योर नोट्स. It is a birth of critical humanism. It's a period, you can say the birth of critical humanism. Okay, the birth of critical humanism. इसको roughly हम कह सकते हैं I began it 14 to 15 period. Some argue it is 14th to 17th century. Okay. So the Renaissance marked decisive break from medieval thinking. ये याद रखना, जो Renaissance है इसका सबसे important point क्या था? The Renaissance marked a decisive break, मतलब बहुत ही different thought process आ गया था from medieval thinking. Okay, so you can say the decisive break from medieval thinking, that is roughly from 9th, 10th, 11th, 12th century. Okay. अब medieval thinking क्या थी? Renaissance is marked because of this part. तो इस पीरियड से पहले क्या था? So what was from medieval thinking? अगर मैं इसको बात करूं तो
Renaissance से पहले से क्या था? So before this period, what he had? Before this period, historian called it as Dark Age. Okay? Dark Age. Write down Dark Age. Basically, no scientific tempo. Why Dark Age? No scientific endeavor. No rationality. Dominance of church. Okay? और जो आपकी सोसाइटी थी, that was operated through divine will. Society was explained through divine will. ठीक है, क्लियर हुआ? यहां समझ में आया? डार्क एज पॉइंट याद रखना, सिर्फ डार्क एज फ्रॉम 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसको हम डार्क एज कहते हैं. यहाँ पे साइंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, रैशनैलिटी की कोई वैल्यू नहीं, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं. मेजॉरिटेरियनिज्म वाज द की पॉलिटिकल आइडिया. पीपल वर नॉट रैशनल साइंटिफिक. So king and theological people or dogmatic people were controlling. Okay, for example, one of the example which I can give here is church have decided somehow कि एरिस्टोटल की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो करेक्ट है. एरिस्टोटल ने बिलीव किया और आर्ग्यू किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, that life forms came out of spontaneously. Okay, or the theory of sun and also on. ठीक है, that sun is geocentric, sun is revolving. तो अब क्योंकि एरिस्टोटल को इन्होंने मान्यता दे दी थी चर्च ने, तो अब कोई भी अगर एरिस्टोटल से बाहर जाए तो वो उसको मार देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे. फॉर एग्जाम्पल निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो. तो गैलीलियो और कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सन इज heliocentric, other planets are revolving around it, and sun is also planet earth is also rotating and revolving. So निकोलस कॉपरनिकस, उसको मार दिया गया, चर्च ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि भाई तुम ये क्या कह रहे हो, हमने तो लिखा नहीं है अपनी किताबों में, एरिस्टोटल ने भी नहीं बताया, तो व्हाटसोएवर यू आर रिसर्चिंग इट्स रॉन्ग, और आप तुम मान नहीं रहे हो, तुम मरो. राइट? या, सो अब यू जस्ट डाई. Then Galileo also said that no, there is something else, तो उसको house arrest कर दिया. So during that period, people were so scared of telling the truth. Similarity आज की दुनिया में भी है, you can't say the truth. Okay? तो जो intellectuals होते हैं उनको इस चीज से गुस्सा आता है, वो सोचते हैं why this is happening, why it is wrong. So these people have called it dark age. फेमाइन भी था, लोग सफर भी कर रहे हैं, जो भी जिसको सही लगता है वो उसको चर्च, क्योंकि एक पावरफुल प्लेस में है, वो उसको बताते हैं. ठीक है, तो रिनाइंस का एक पीरियड आया जहां पे लोगों ने इसको क्वेश्चन किया. अब फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बेकन, वो पोम लिखते थे, शेक्सपियर वो प्ले लिखते थे, सोक्रेटिस ऑल्सो हैड टू एग्जीक्यूट, वो भी उनको भी मार दिया गया था क्योंकि ही वाज आल्सो क्वेश्चनिंग ऑन जस्टिस एंड दिस. प्लेटो, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, तो उन्होंने, प्लेटो ने भी इसको क्वेश्चन किया, ये सारी चीजें. तो अब ये था कि ये एज में कोई रैशनैलिटी नहीं है, वन मैन पीपल, जो भी सही लग रहा है वो करो एंड ऑल दैट, सेल्फिश पीपल. तो सोसाइटी वाज नॉट एट ऑल रैशनल. Okay, so dark age. Now what Renaissance intellectual?
रेनेसांस इंटेलेक्चुअल ने चैलेंज किया, बट रोमांटिसिज्म के साथ। रोमांटिसिज्म मतलब कि उन्होंने डायरेक्ट चर्च को क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, आज के टाइम में भी ये हो रहा है, आपको पता है? इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज हैपनिंग। हु आर डूइंग दिस? अगर आप थोड़े से भी एनालिटिकल हो, ओके, तो आप इस चीज को समझोगे। These intellectuals took the help of art, literature. आर्ट और लिटरेचर से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। शेक्सपियर की अगर राइटिंग्स देखोगे तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, जॉर्ज ऑलवेल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज के टाइम में कौन कर रहा है? लाइक उससे और भी है, उससे बड़ी भी है, एक कॉमेडियन है, व्हाट्स हिज नेम, मैं भूल रही हूँ उसका। पॉलिटिकल कॉमेडियन जो हमेशा मोदी जी को बोलते रहते हैं। ही गॉट अरेस्टेड आल्सो। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, राइट? There are so many, right? So these people are criticizing government, but in different manner. कि भाई हम तो जोक मार रहे हैं, आपको क्या हो गया, राइट? हम तो कहानी लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, आपको क्या हो, मतलब बुक्स पे भी वो रेडिकल नहीं लिख पा रहे हैं। तो आज भी वो टाइम है, ठीक है? अब क्योंकि सोसाइटी बदल चुकी है, चीजें बदल चुकी है, सोशल मीडिया अब एक तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट करता है। ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है? तो हमेशा से आप ये काम करते हैं, बट हम यहाँ पे सोशियोलॉजी के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आज भी ऐसा नहीं है कि whatsoever had happened in the past, it is not going to make relevance or sense to us to understand our modern day society. The past actually is the key to see and analyze your present society, because history repeats itself. It's a pattern. It will always be there. So कुछ भी चीज जो है वो अचानक से नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूशन में होती है, ठीक है? तो अब रिनायंसा क्या है? रीबर्थ। अब रिनायंसा ने क्या किया? राइट डाउन, रिनायंसा इंटेलेक्चुअल्स चैलेंजेस। रिनायंसा intellectuals have challenged this. ओके, ये जो ऊपर सब हो रहा था उसको उन्होंने चैलेंज किया। ओके, तो इनका दो मेजर आर्गुमेंट्स थे। सो दे एम्फसाइज, so they emphasize human agency, okay, reason and individuality. Okay, so they revived classical Greek Roman thought. उन्होंने कहा कि भाई जो रोमन थॉट है, क्योंकि अभी मैं जब आपको एडवांस पढ़ाऊंगी तो सिविलाइजेशन सारा समझाऊंगी। सो दे रिवाइव क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन थॉट। ओके, तो यहाँ पे एक की शिफ्ट हुआ, लिखेंगे वी हैव गॉट अ की शिफ्ट फ्रॉम गॉड सेंटर्ड वर्ल्ड टू होम। मतलब अब आपका जो पहले, यू कैन से कि पहले घरों में हर चीज, अगर मैं बहुत ही प्राइमरी पॉइंट से बताऊं तो आपका जो होम था इट वाज डेफिनेटली गॉड सेंटर, बल्कि गॉड ने ये कहा, गॉड ने वो कहा, ठीक है? इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। यही प्योर बैक आगे इसको चैलेंज करते हैं। सो टू ह्यूमन सेंटर्ड इंक्वायरी। तो यहाँ पे जो एक मेजर की शिफ्ट आया, जो आप लोगों को याद याद करना है बस, ये की शिफ्ट जो आया, ठीक है?
So the intellect, the from God centered world, from God centered world to human, यहाँ पे ह्यूमंस की वैल्यू होने लगी, टू ह्यूमन सेंटर्ड इंक्वायरी। ठीक है, समझ में आया? ये जो इंटेलेक्चुअल्स अवेकनिंग हुई, therefore the intellectuals awakening made it possible to question society itself. ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे एक रेनाइंसा ने दूसरा एक इंपॉर्टेंट फेस लाया, दैट इज एनलाइटनमेंट। ओके, एनलाइटन मतलब अब डार्कनेस से हम लाइट की तरफ आ रहे हैं। ओके, सो वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड फेज, द एनलाइटनमेंट, राइट? यू नो, सो आप लिखेंगे एनलाइटनमेंट, reason as the tool to understand society. ठीक है, मतलब अब डार्कनेस से आप एनलाइटनमेंट में आ गए। अब एनलाइटनमेंट थिंकर्स का क्या बिलीव है कि रीजंस, ओके, सोसाइटी, ये सारी चीजें 16th-17th सेंचुरी में लोग इसी के बारे में बात करने लगे। फिर आप देखोगे कैसे ऑगस्ट कॉम्टे ने भी इस आइडिया को और लाइक यू नो एलैबोरेट करा। सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉज जस्ट लाइक नेचर। ओके, कि सोसाइटी जो है वो भी, तो उनका पहला पॉइंट था दैट सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉज जस्ट लाइक नेचर। समझ में आ रहा है? ह्यूमन रीजन कैन डिस्कवर दिस लॉज। तो ह्यूमन अपने दिमाग को यूज करें, ह्यूमन रीजन कैन डिस्कवर these laws, these laws. ओके, समझ में आ रहा है? रिलायंसा में भी बहुत सारे थिंकर्स थे, एनलाइटनमेंट के भी बहुत सारे थिंकर्स थे। अब आई वुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन रिलायंसा और एनलाइटनमेंट के फिलोसोफर्स एक साथ आप क्लब भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, तो कुछ थिंकर्स को आपको समझना होगा। ओके, जो अब आपका पॉलिटिकल थॉट, अगर आप लोगों ने फिलोसफी पढ़ी है तो मैं कुछ अभी थिंकर्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ लिटिल बिट। ओके, ताकि आपको समझ में आए कि भाई सोशियोलॉजी में ओरिएंटेशन होनी क्या चाहिए। और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर देखा जाए तो। अब मैंने आपको भी मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी टॉपिक बहुत ही एनसीईआरटी क्लास 11-12 लेवल पे करा दिया। ठीक है, अब जब आप आपका जब बेस बनेगा तभी तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को क्वेश्चन कर पाओगे ना। एक बारी में बहुत, मेरे लिए बहुत आसान होगा,
मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाती चली जाऊँ, बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन क्वेश्चंस आपका बड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आएगा, चेकिंग बड़ी डिफिकल्टी के साथ होगी, एक्सपेक्टेशन टीचर का बड़ा डिफरेंट होगा। अगर 20 मार्क्स में से अगर आपको 12 to 14 के रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं तो मतलब आप तो टॉप करोगे ही करोगे फिर। ठीक है, 300 अबव 320 अबव लाना बहुत आसान है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बिना आई वुड से कि सिर्फ उन्होंने पेपर 1 पढ़ा, पेपर 2 भी नहीं पढ़ा, तब भी पेपर 2 में उस साल उसके हाईएस्ट मार्क्स थे। ओके, तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को समझना है। सोशियोलॉजी हमेशा ही टॉप 5 में रहता है हर साल। कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही है जो सोशियोलॉजी के साथ टॉप करता है। उसका हो सकता है उसकी सोशियोलॉजी में हाईएस्ट ना हो मार्क्स, ये भी मैं आपको बता दूं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हो, उसकी 280 290 आप लोग चेक भी कर लो, हो सकता है वो हो, लेकिन वो इतना ओवरलैपिंग है ना ये सब्जेक्ट कि आपको क्रिटिकल बना देता है, जो कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप वो ऐसे में भी रिफ्लेक्ट करते हो, सारे टॉपिक्स में भी रिफ्लेक्ट करते हो, आप हिस्ट्री भी अब अपने सोच से समझते हो, इसीलिए आपका ना एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होता है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। मैं कुछ थिंकर्स आपको बताती हूँ, देखेंगे हम। थॉमस होब्स। अब थॉमस होब्स जब आप पढ़ोगे पॉलिटिकल थॉट में तो डिफरेंटली है। मैं यहाँ पे एज अ सोशियोलॉजिस्ट और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट समझा रही हूँ। He saw society as emerging from a social contract. ठीक है, saw society saw society as emerging from a social contract. Without order, life is nasty, brutish, or short. Okay? Without order, life is nasty, brutish, or short. ओके, तो इनका फोकस था, क्या था इनका फोकस? नीड स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। Thomas Hobbes, okay. Then you have another thinker, John Locke. Argued humans have natural rights. लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, लाइफ ये इनकी नेचुरल राइट्स है। ओके, जॉन लॉक, इनका क्या फोकस था? इसको डीपली पढ़ेंगे बाद में एडवांस लेवल पे। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन पीपल। लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की, legitimacy of people depend on गवर्नमेंट। ठीक है, जॉन लॉक का ये आर्ग्यूमेंट था। सी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे लिए जीन जैक्यूज रूसो। जनरल विल सोसाइटी विल, जो इमाइल डरखाइम ने मिली है, इसको स्टार बना लेना। लेजिटिमेसी ऑफ पीपल, ऑफ
ये मैंने उल्टा लिख दिया। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड ऑन पीपल, पीपल डिसाइड करेंगे कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे जीन जैक्यूस रूसो। ओके, emphasized general will and collective sovereignty. एंड कलेक्टिव सॉवरेनिटी, इनका क्या फोकस है? सोसाइटी शेप्स इंडिविजुअल्स। मॉन्टेस्क्यू, और ये जो पॉइंट है ये बाद में आपको दिखेगा, इमानुएल डर्कहाइम ने भी अपनी थ्योरी इसी इनकी ही थ्योरीज पे लिखी है। ओके, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया है, डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर बताया है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर, okay, so it's a early comparative method studying in society. Then you have Voltaire, वोल्टायर का आप लिखेंगे क्रिटिकल इंक्वायरी में, उन्होंने ट्रेडिशन सुपरस्टिशन इन सबको बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया था। वोल्टायर क्रिटिक ट्रेडिशन, critique tradition etc. Okay, encouraged critical inquiry. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर इमैनुअल कांट, फिलोसफी पूरी नहीं है अगर आपने इमैनुअल कांट को नहीं पढ़ा हुआ है। उन्होंने एनलाइटनमेंट को बताया था, डेयर टू नो द एज ऑफ रीजंस, और इंटेलेक्ट डेयर टू नो। ओके, इमैनुअल कांट आर्ग्यूज कि देखो आपको ये समझना है कि क्यों ये जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एनलाइटनमेंट में द एज ऑफ रीजन में डर्कहाइम और ये सारे जो मतलब बाद में थिंकर्स हैं, ये इमैनुअल कांट की रीडिंग से ही एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इन्होंने एक बुक और लिखी है, प्रैग्मेटिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें वो यही बता रहे हैं कि कैसे स्पीशीज डिफरेंट है और आपको बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स स्टडी करना पड़ता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बताई है इमैनुअल कांट ने, वो ये कि जो लोग है ना वो कॉवर्ड है। ओके, दे आर लेजी टू क्वेश्चन, उनको लगता है कौन इतनी मेहनत करे, क्यों क्वेश्चन करे, जो गवर्नमेंट कर रही है करने दो। फिर वो बोलते हैं दे आर लेजी बिकॉज दे आर कॉवर्ड, दे डोंट क्वेश्चन, एंड दे आर लेजी और कॉवर्ड बिकॉज सिस्टम हैज मेड देम लाइक दैट। तो गवर्नमेंट उनको बता देती है कि तुम ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो हम तुमको मार देंगे, ठीक है, और तुमको ब्रेड एंड बटर तो मिल ही रहा, करते रहो ये सारी चीजें। तो इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि यू नीड टू रीजन, आपको सोचना होगा, आपको करेज दिखानी होगी। ओके, समझ में आया? Renaissance and Enlightenment phase. How many of you do understand this? तो अब यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वी डू हैव एन इंटेलेक्चुअल शिफ्ट।
फिलोसफी से हम प्रोटो सोशियोलॉजी पे आए, अभी सोशियोलॉजी आई नहीं है। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सारे, यहाँ पे इन्होंने एक शिफ्ट दिया, इसको आप येलो से लिख लो। इंटेलेक्चुअल शिफ्ट, देखो वो क्या शिफ्ट हुआ, फ्रॉम फिलोसफी टू प्रोटो सोशियोलॉजी। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, क्या ये थिंकर सोशियोलॉजिस्ट थे? दीज थिंकर्स वर नॉट सोशियोलॉजिस्ट। जितने थिंकर्स बताए मैंने, these thinkers were not at all sociologists. ठीक है, these thinkers were not sociologists, but इन्होंने एक बड़ी crucial things कर दी। ठीक है, 3 crucial things they did. Secularized thought, रिलीजन से दुनिया अलग कर दी। अब रिलीजन has taken backstage, ये खुद लिख लेना। Rationalized inquiry, rationalized inquiry कर दी, समझ में आया? Generalized laws, search for universal principles. Universal principles. This is the intellectual DNA of sociology. How many of you got clarity on this? इसको मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, don't worry. Got the clarity, all of you, online aspirants? Krishna, Aman, got the clarity? Okay. Now do one thing. Do one thing. जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समरी लिखो अभी इसी वक्त क्लास नोटबुक में। आंसर नोटबुक लेके आयो? ओके, वैसे आंसर शीट से बेटर है आप एक नोटबुक बनाओ, कि स्पाइरल वाला वो भी चेंज हो जाता है। फिर बाद में सारे नोट्स में हटवाती हूँ, टॉपिक 1 आता है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं। एनी हाउ वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम। अब आप लोग क्या करोगे, अभी आप रिनाइंस और इंटेलेक्चुअल जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है, आई एम गिविंग यू गुड 15 मिनट्स, ओके। और उसके बाद दोबारा से मैं आप लोगों को ये पॉइंट सारा रिवाइज करवाऊंगी कि आपने क्या लिखा क्या नहीं। So you people have enough time. Write good answer in it. I'm writing a question. So this is a test number 3. Yeah. Krishna, ये test number 2, 3 कौन सा? I think this is a third number. Third, ma'am. Okay, test 3. अब मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ, ये लिखेंगे आप।
Discuss Renaissance. Okay. Discuss the contribution of Renaissance and Enlightenment period in the development of sociology. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. Will have enough time. You can revise and write. You can take 15 minutes. It's like 9:30 से भी लेते हैं. तो okay. I'll come around 9:45 a.m. We'll stop writing during this time. Okay? It's an open book test. मतलब आप अपने notebooks को notes जो मैंने दिया वो रेफर कर सकते हो.
Okay, guys, so now what I'll do, we are going to have a discussion on this. See, guys, understand this. The question here is that how did intellectuals lead to the development of sociology? So this is a core topic in your topic 1 of sociology, that how sociology have emerged. Now you need to see that sociology is just not a discipline, okay? So this is very important for all of us to know that sociology is not a discipline, it is a response of intellectuals to the crisis, okay? Sociology, yes, appeared in 19th century. First of all, this is a very important point. But its foundations laid in the historical phases. So to understand how it emerged in 19th century, you have to go back into the past. Now, most of us do not have this clarity. You are preparing, as I have told you, that civil services, it's not only about the content, but how you are articulating. Now, here, intellectuals, you see it as variables and independent variables. So these are some of the important parts in which you can write differently. Okay. So here, you need to know that this is what Durkheim have said and Auguste Comte have said, that okay, this is, we need to see that how sociology is a science that is, discovering the laws. But how this idea have germinated, how Auguste Comte have got this idea that we need to apply positivism. This is what you people have to understand, okay? That sociology is a science. This is what we all know. But how this idea actually sparked, okay? How this actually occurred. What was it ushering stage? This is really important for all of us. Now, when you go deeper insights into it and when you are framing your answer, you do have to mention it. Though it appeared in 19th century, but it has its foundation in the historical antecedents. And there we do have different intellectuals in different phases. So this is important part which I have already told you. Now, this is how you should write your answer. For example, when you are writing, coherence is really important. So I have told you to write this point that sociology did not emerge in isolation. It means that we do have a lot of intellectuals who have given their theories, okay? Their theories only we have taken as defining factors in sociology as a discipline, okay? So this is again important. So intellectual response is there. Now you will see who are the real architects of sociology. They are not the only scholars, they are thinkers. Thinkers confronting disorder, because sociology has one pure objective: to promote humanity, to create peaceful atmosphere around our world. This is what intellectuals have argued, and they brought up break from medieval thinking. In medieval thinking, they argue that there is irrationality, there is superstitious values, and religion or church cannot decide how society should operate. Okay, this is another important part. Now, I have already explained this. Emile Durkheim, Auguste Comte. Yes, you need to write all this in your answer, but before that, you need to give deeper insights. Okay? That is what I have told you, that how dark age you people have to tell. So this is how you can start your answer. Though sociology appeared in the 19th century, its foundation were laid much earlier. Clear hai? Though a long intellectual transformation that began with the Renaissance, followed by the Enlightenment during French and Industrial Revolution. Now it is again very important that how you are making crispy points. You may have to write this answer in 150 words. That means that you will not have enough space to write elaborated answer. You need to write really, really coherent and crispy answers. So it means that the intellectuals which we have discussed during Renaissance and Enlightenment period, you would need to write that. So Renaissance, okay, you just write down the time phase. So it is for, different thinkers have articulated differently. So from 14th to 15th century, it is focusing on humanism, right? It is talking about how we need to get into this humanistic values. So it is the beginning of critical thinking, where we have revived Greek and Roman literature.
or ideas. So I've written this. Now in Enlightenment, so they wanted reasons, empiricism to read and understand the social world. So they argue that social world can be examined by applying natural science laws. Then you can discuss, as we have discussed, right? Thomas Hobbes, right? You know, tell me all the thinkers which we have discussed. Thomas Hobbes are there, Rousseau is there, John Locke is there, right? Rousseau is there, Voltaire is there, Immanuel Kant is there. Now just write down all these words here. So this is what you people have to understand. It is just not about the content, but how you are articulating your answer. Okay? So Renaissance, the birth of critical humanism, the decisive break from medieval thinking. What is medieval thinking? It is a dark age. Society was explained through divine will. ना मैंने भगवान को देखा है ना आपने भगवान को देखा है. We have created scriptures around us, and somebody is telling us that God wants this. How do we know that you spoke to the God, or you have written the scriptures as scientific as it is, or as divine it is? Because you cannot question it. Wherever beliefs are there, जहां पे भी भगवान आ जाते हैं वहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. ये तो प्लेटो ने भी आर्ग्यू किया था कि डेमोक्रेसी में everything will be wrong, philosophers should be ruling the world. Then what Plato have said कि philosophers को पावर, ऑटोनॉमी और लेजिटिमेसी मिलेगी कैसे? तो he said that एक झूठ बोलना पड़ेगा. वो क्या? कि भगवान ने कहा है. Okay, this is what you can study in his work, The Republic, Plato का work. So this is now you need to understand कि किस तरीके से interdisciplinary approach में इस point को आपको discuss करना है, right? So dark age, no scientific endeavor. Dark age तो तभी है ना अगर आप rational नहीं हो, अगर आप सही को सही नहीं कह सकते हो, गलत को गलत नहीं कह सकते हो, आप एविडेंस को डिस्टॉर्टेड करते हो क्योंकि आपको कुछ प्रूव करना है. You want to prove something, so this is wrong, right? So this is wrong. Irrational हो गया. So Renaissance intellectuals have challenged this. They emphasize human agency, reasons, and individuality. And this is a key shift from God-centered world to human-centered inquiry. The intellectuals' awakening made it possible to question society itself. समझ में आ गया? तो Renaissance की वजह से हमने society को question start कर दिया. Now enlightenment is followed by Renaissance. So reason as the tool to understand society. रीजन जो है वो एक टूल है जिससे कि आप सोसाइटी को समझ सकते हैं, राइट? सो सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉज जस्ट लाइक नेचर. वो आपको डिस्कवर करना है. ह्यूमन रीजंस कैन डिस्कवर देम. देन यू हैव थॉमस हॉब्स, हमने बताया. अब इसको थॉमस हॉब्स को आपको पॉलिटिकली नहीं स्टडी करना है, सोशियोलॉजिकली. तो थॉमस हॉब्स सॉ सोसाइटी एज इमर्जिंग फ्रॉम अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. विदाउट ऑर्डर लाइफ इज going to be nasty, disorder, chaos. So you need strong authority. John Locke argued humans have natural rights, liberty, equality, and all that. Focus कि legitimacy of government depend on people. People ही आपको democracy में power देंगे. This is what his ideas. Rousseau, very important, emphasize general will and collective sovereignty. Later you will see that how Emile Durkheim की जो ideas हैं, collective consciousness, it is highly influenced by his writings. Then Montesquieu, separation of power, which you will also see in sociology, classical thinkers की point, division of labor में, right? Then Voltaire, critical thinking को इन्होंने encourage किया था. Immanuel Kant, dare to know. जो लोग question करते हैं वो daring होते हैं और जो लोग question करते हैं वो lazy भी नहीं होते हैं. तो उन्होंने अपना age of reason में एक explanation दिया. तो अब ये सारे pointers आप you need to write in your answer that how did sociology emerge. तो ये दो important part है. So these thinkers, now the catch here is that these thinkers were not sociologists. These thinkers were philosophers. You need to write this as well. So Renaissance philosopher, Enlightenment philosopher, they or the French Revolution, Industrial Revolution के time पे जो philosophers हैं, they were not sociologists. They were philosophers, but somehow they set the stage for sociology. So from philosophy to proto-sociology. Sociology से पहले जो phase आया था, that is proto-sociology. These thinkers were not sociologists, but they have brought three crucial things in shaping sociology. And what is that? Secularized thought, religion को separate कर दिया, rationalized inquiry, generalized laws.
This is the intellectual DNA of sociology. Now, this is a question for your practice. Discuss the contribution of Renaissance and Enlightenment period in the development of sociology. इसके बाद दो और important phase है, that is French Revolution and Industrial Revolution. Together, all these phases have led to the development of sociology. This is what you people have to realize, that sociology is definitely just, it is not a discipline. It is helping you to think rationally. It is helping you to think scientifically. Now, if the question came like this, that how did intellectuals led to the foundation of sociology? You need to talk. Now, if it is for 150 words, so Renaissance and Enlightenment का phase you need to explain in a फ्लो चार्ट, आपको क्रिस्टल वर्ड्स में यूज करना होगा, फिर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्लासिकल थिंकर्स जो उनका भी पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा. दिस इज हाउ यू पीपल कैन एक्चुअली राइट अ गुड क्रिस्पी एंड हाई फैचिंग मार्क्स आंसर्स इन सोशियोलॉजी.